Hello students, in previous video lecture we learned the factors determining capital structure and meaning of optimum capital structure. Now in this lecture we discuss the features of an optimum capital structure and capital structure theories. In capital structure theory we discuss the net income approach and net operating income approach. Okay, so let's start with features of an optimum capital structure. First feature of an optimum capital structure is simplicity. All businessmen are not educated. A complicated capital structure may not be understood by all. On the contrary, it may raise suspicion and create confusion. A capital structure must be as simple as possible. Okay, so ये एक फीचर है दिस मतलब सिंप्लिसिटी मतलब कि सभी बिजनेसमैन जो है वो बहुत एजुकेटेड नहीं होते हैं. ओके, सो कैसा होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर? सिंपल होना चाहिए. उसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए या कुछ सस्पिशियस ऐसा कुछ रेज नहीं होना चाहिए. ओके, सो एज सिंपल एज पॉसिबल. देन सेकेंड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी. An optimum capital structure is one which maximizes earning per equity share and minimizes cost of financing. Okay, मैक्सिमाइज क्या होना चाहिए? EPS मतलब अर्निंग पर शेयर. कौन से शेयर का? इक्विटी शेयर का. एंड मिनिमाइजेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. सो प्रॉफिटेबिलिटी ये फीचर उसमें दिखेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में. ओके, सो profitability is another important feature of an optimum capital structure. Then third one is solvency. In a sound capital structure, content of debt will be a reasonable proportion of the total capital employed in the business. As a result, it has minimum risk of becoming insolvent. ओके, सो सॉल्वेंसी होनी चाहिए. सो सॉल्वेंसी होने के लिए क्या चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में? सो कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर. कंटेंट ऑफ डेप्ट विल बी अ रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल इन द बिजनेस. सो इसके वजह से रिस्क जो है वो मिनिमम हो जाएगी और जो मतलब बिजनेसमैन है वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा. ओके, सो सॉल्वेंसी ये फीचर आएगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में. ओके, देन फ्लेक्सिबिलिटी. feature of an optimum capital structure is flexibility. The capital structure of a firm should be such that it can raise funds as when required. मतलब जब भी चाहिए तभी फंड्स रेज करते आने चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में. ओके, सो फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा चाहिए? फ्लेक्सिबल चाहिए. ओके, सो उसमें कभी भी कितने भी फंड्स जो है ज़रूरत पड़ने पर रेज करने के लिए आने चाहिए. इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ये अनदर फीचर है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का. नेक्स्ट इज conservatism. The debt content in the capital structure of a firm should be within its borrowing limits. It should be free from the risk of insolvency. कन्वर्ट होना चाहिए मतलब एक जब जो भी बोरोइंग डेप्ट है वो इंसॉल्वेंट न होने के लिए. ओके, फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी मतलब सॉल्वेंसी आने के लिए कंजर्वेटिज्म ये फीचर रहना चाहिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में. देन नेक्स्ट वन इज कंट्रोल. द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन अ सच अ वे दैट रोल ऑफ द फर्म. जो कुछ भी लॉस है वो मिनिमम रहना चाहिए. सो कैपिटल स्ट्रक्चर में कंट्रोल ये फीचर रहना चाहिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में, so that we can minimize the risk of loss of
the firm. Okay. Then next one is optimal debt equity mix. Optimal debt equity mix. Optimal debt equity mix is the capital structure of a company would be that point where the weighted average cost of capital is minimum. Optimum debt equity proportion establishes balance between owned capital and debt capital. The firm should be cautious about the financial risk associated with maximum utilization of debt. ओके, सो डेप्ट इक्विटी का मिक्सचर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए. इसके वजह से क्या होगा होगा प्रपोर्शन एस्टैब्लिशेस बैलेंस बिटवीन ओन कैपिटल एंड डेप्ट कैपिटल. ओके, वो एस्टैब्लिश करने के लिए इजी जाएगा. और द फर्म शुड बी कॉशियस अबाउट द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डेप्ट. डेप्ट अगर कम यूटिलाइज होगा तो फाइनेंशियल रिस्क भी कम होगी. ओके, next and last feature of an optimum capital structure is maximization of the value of the firm. An optimum capital structure makes the value of the firm maximum. मतलब जब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उससे उसके वजह से क्या होता है, फर्म का वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमम होता है. ओके, सो अगर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइज हो तो फर्म की वैल्यू भी मैक्सिमाइज होती है. ओके, सो दीज आर टोटल 8 फीचर्स ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, सो we can discuss next is the capital structure theory. In that theory we discuss two approaches, net income approach and net operating income approach. इसमें क्या डिफरेंट है ये देखेंगे. ओके, नेट इनकम अप्रोच. अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच अ फर्म may increase the total value of the firm by lowering its cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो करने की वजह से नेट इनकम अप्रोच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज हो जाएगी. Okay, when cost of capital is lowest and the value of the firm is greatest, we call it the optimum capital structure for the firm, and at this point the market price per share is maximized. Okay, the same is possible continuously by lowering its cost of capital by the use of debt capital. In other words, using more debt capital with a corresponding reduction in cost of capital, the value of the firm will increase. Okay, the same is possible only when first one cost of debt, उसको लिखेंगे के डी करके, is less than cost of equity, के ई. Second one, there is no taxes. And third one, the use of debt does not change the risk perception of investors since the degree of leverage is increased to that extent. अगर आपको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो चाहिए और मार्केट प्राइस शेयर मैक्सिमम चाहिए, तो ये पॉसिबल है. तो कब पॉसिबल है, तो ये 1, 2 और 3 अगर होंगे कंपनी फर्म में तो ये नेट इनकम अप्रोच सही से आएगा फर्म का. ओके, सो ये 3 क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयर आर नो टैक्सेस, and the use of debt does not change the risk perception of the investors since the degree of leverage is increased to that extent. Okay, since the amount of debt in the capital structure increases, weighted average cost of capital decreases, which leads to increase the total value of the firm. So the increased amount of debt with constant amount of cost of equity and cost of debt will highlight the earning of the shareholder. Okay, the next approach is
net operating income approach. Okay. Now we want to highlight the net operating income approach, which was advocated by David Durant based on certain assumptions. Okay. ये assumptions जो है वो assume करके net operating income approach highlight किया गया है. First one is, they are, first, the overall capitalization rate of the firm, that is KW, is constant for all degree of leverages. Second one, net operating income is capitalized at an overall capitalization rate in order to have the total market value of the firm. Okay, thus the value of the firm means V is a overall cost of capital. Okay, V is equal to value of the firm में क्या है, EBIT, earning before interest and tax, divided by KW. KW means overall capitalization rate of the firm. Okay, since both are constant and independent of leverage. Then third assumption is, the market value of the debt is then subtracted from the total market value in order to get the market value of equity. मतलब S minus V minus T. Okay, market value of the debt is then subtracted from the total market value in order to get the market value of equity. Then fourth one is, as the cost of debt is constant, the cost of equity will be KE, means cost of equity, is equal to EBIT minus I divided by S. Earning before interest and tax minus interest divided by S. S means subtracted from the total market value. Okay. So ये है अपना नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ओके, इट कैन बी इवेल्युएटेड with the help of the following diagram. Okay, behavior of KE, KW and KD. Okay, so KE ये शोन किया है डॉट डॉट जो लाइन है उसमें वो, और KW शो हुआ है ग्राफ में वो एक लाइन है. ओके, हॉरिजॉन्टल. ठीक है. So under this approach, the most significant assumption is that the KW is constant irrespective of the degree of leverage. The segregation of debt and equity is not important here, and the market capitalizes the value of the firms as a whole. Cost of KW जो है वो KW constant होना चाहिए irrespective of the degree of leverage. Okay, thus an increase in the use of apparently cheaper debt fund is offset exactly by the corresponding increase in the equity capitalization rate. So the weighted average cost of capital means KW and KD, cost of debt, remain unchanged for all degrees of leverages. Needless to maintain here that as the firm increases its degree of leverage, it becomes more risky proposition and investors are to make some sacrifice by having a low profit earning ratio. P ratio means profit earning ratio. Okay, सो ये एजम्पशन जो देखे हमने 4 एजम्पशन, उसके हिसाब से ये नेट ऑपरेटिंग इनकम का डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया गया है. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, देन KW मीन्स cost of capital, and KD means cost of debt. Okay, so cost of debt and cost of capital are remain constant, and cost of equity get increases. Okay, so
to follow these four assumptions, you made this graph. Okay. Hope you all understand the features of optimum capital structure and capital structure theory, that is net income approach and net operating income approach. In my next video, we discuss about traditional approach theory and Modigliani Miller approach. It's called MM approach. Okay, so till then, take care. Thank you.